इलास्टिसिटी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे. फर्स्ट वन देख लीजिए, elastic versus your plastic body. Elastic versus your plastic body. Elastic किसको बोलते हैं बेटा? The body which can regain their original shape after the removing of your deforming force is called as of your elastic. So I can say that a body that regains original shape after removal of deforming force. After removing of deforming force. Example, steel. Steel is the best example for your elastic body weight. Whereas plastic body is nothing but a body does not regain its original shape. Example, duct, clay, rubber, etc. Rubber after heating. Okay. So body that regains its original shape after the removing of deforming force is called as plastic body. And a body which doesn't regain its original shape is called as of your plastic body. Example is duct, clay, rubber after heating, etc. And steel is the best example for your elasticity. Or elastic, I can say basically. Clear, beta? See, in this one, what is happening is, see, if I take a rubber, this one, and say for example, this is fixed here, right? Okay. Now when I'm applying some external force acting on this one, like F external, so somewhere at this position, this will be your F resistive. That means Fr is your restoring force. Okay, and F external is your deforming force, because I'm applying it to change the shape. That is the reason we are calling it as of your deforming force. So this is, say for example, original length. Then after we apply the deforming force, the length of this one will become for me L plus of your delta L. That means it has been increased by your delta L right now from here to here. Okay. Then after a certain interval of a time, that means at equilibrium, F external will be equal to your F restoring. You go on apply the force, a time will come where your applied force will be equal to your restoring force. Okay, so that point is called as of your equilibrium point. So at equilibrium condition or at equilibrium point, your applied external force must be equal to your restoring force. This must be equal to your restoring force. Clear? So body that regains original shape after removal of deforming force is called as a steel, and a body which doesn't regain its original shape after deforming of the forces is called as of your plastic body. Okay, chalo, next one. Stress and strain for elastic materials. What do you mean by stress, beta? Stress comes due to the restoring force, beta. This is coming due to your restoring forces. Restoring forces. Okay. So, अपने को syllabus में, if I'm talking about your stress,
Three types of stress have been present, beta. First one is your normal stress. Next one is your shear stress. And third one is your bulk stress. Bulk bolo या hydraulic bolo, one and the same. ठीक है? Yeah. So stress is nothing but, मान के चलो अगर कोई मटेरियल है मेरे पास ऐसा कुछ, ठीक है? If I'm applying the force on this body normally like this, capital F, or on this body, capital F is this one. And this is the area of cross section on which you are applying the force. Area A. So stress will be equal to force by your area. Stress will be equal to your force by area. उसी तरह से, if I'm talking about shearing stress, मान के चलो cubical body is kept on an horizontal surface. When I'm applying the force on this one like this, capital F, तो क्या हो रहा है इसका जो कंडीशन है, it is slowly changing. तो ये पॉइंट ये ना यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट जो है ना और जरा सामने हो गया. And this is right now in the front direction. थोड़ा सा. Okay. So this force which is acting tangentially on this one is making this change in area for this body. So here also we are talking about stress is equals to tangential force divided by your area. Tangential force divided by area. अब इसके अंदर देख लीजिए, अगर कोई बॉडी जस्ट रफ बॉडी ऐसी है और यू आर exerting the force on this body in all the directions like this, just a balloon. So what is happening? It is changing its shape. मान के चलो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाए, change होके, isn't it? So here pressure is acting, isn't it? Excess pressure भी होता है इसके अंदर basically. So ये change किसकी वजह से हो रहा है बेटा? Here it is change in pressure, delta P बोलो या P excess बोलो. Clear? ये हो गया टेंजेंशियल फोर्स. उसी तरह से स्ट्रेन, उसी तरह से स्ट्रेन. स्ट्रेन इज ऑल्सो थ्री टाइप्स. वन इज योर नॉर्मल स्ट्रेन, नेक्स्ट वन इज योर shear strain, and third one is your volume strain. ठीक है? नॉर्मल स्ट्रेन में देखो क्या हो रहा है, व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी, ये मान के चलो ओरिजिनल बॉडी है, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, तो इस फोर्स की वजह से देयर इज चेंज इन लेंथ यहाँ पर. दिस इज L प्लस ऑफ योर डेल्टा L. Done. So strain is change in length divided by original length. It has no units बेटा, क्योंकि दोनों भी रेशियो है, so it has no units. Yes बेटा. Strain will be equal to what? Change in length by your original length. उसी तरह से shearing strain. When I'm applying the force on this one, tangential, this will come here and this point will come here, right? Change in shape.
this. This is say for example H, making an angle theta, and this one is say for example X. So shearing strain or strain is represented by letter theta, that will be equal to your X by your H, and theta is equals to X by H because theta is very, very small. Then in the same way, if I'm talking for your volume strain, when you're applying the force on this one in all the directions, there is change in the shape of the body. ठीक है, तो ये चले गया कुछ ऐसा अंदर होते. So here volume strain can be written as of here change in volume divided by original volume. Yeah. Sure. Now very important application. मान के चलो this is some rod of length L. इस पे मैंने फोर्स यहाँ पर लगाया इस तरह से कैपिटल F, and also in this direction capital F. The length of this body will change obviously. तो अगर इसके अंदर मैं क्रॉस सेक्शन ऐसा कुछ ले रहा हूँ बेसिकली, this is your cross section which is ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका नॉर्मल, तो और इसका कंपोनेंट ना इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा हियर. ठीक है, तो ये छोटा सा एरिया यहाँ पर इस तरह से. ठीक है, सो दिस एरिया इज मान के चलो S1. ओके, द क्वेश्चन इज फाइंड नॉर्मल, और इसको टेंसिल भी बोलते हैं, टेंसिल stress and shear stress on surface S1. ठीक है, we got a rod of length L जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है on both the directions with your capital F. ठीक है ना, तो now area of cross section of this one S1 is making an angle theta with your X. यानी देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ले रहे हैं बेसिकली अपन, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा कैपिटल ए. ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर ले रहा हूँ. यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, इसके ऊपर जो है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये का एरिया इस डायरेक्शन में है, और एक्चुअल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना कैपिटल ए इस डायरेक्शन. देखो इसका इस पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना इट इज इन द एक्स एक्सिस नॉर्मली, लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा, इजंट इट. ये हो गया इसका थीटा. अगर इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो ए डैश का इसके ऊपर कंपोनेंट बनेगा बेटा, दैट इज ए डैश इनटू कॉस थीटा, और इसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा ए डैश इनटू योर साइन थीटा. ठीक है ना, तो ए डैश कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, ए डैश कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कैपिटल ए, यानी ए डैश विल बी इक्वल टू योर ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अंदर. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अगर एफ भी लग रहा है तो सेम कंडीशन होगा. देखो मान के चलो अगर इस पे फोर्स लग रहा था इस तरह से, ये हो गया फोर्स एफ. अगर इसको इंक्लाइन कर रहा हूं मेक एन एंगल थीटा, तो यहां पर कोसो कंपोनेंट लगेगा बेटा एफ कॉस थीटा. ठीक है,
एंड इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, F sin theta, because force is on the horizontal direction. If it is making angle theta, we can resolve the force in the x-axis and as well as of your y-axis part of relation. ठीक है ना, तो पहला वाला अपन टेंसिल स्ट्रेस निकाल लेते हैं. टेंसिल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू force by your area. Force मतलब F cos theta. So that is equals to your F cos theta divided by A dash. A dash is how much for me? A divided by cos theta. तो ये बन गया मेरे पास F इंटू कॉस ऊपर चले जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये हो गया टेंसिल स्ट्रेस. ठीक है ना. सो therefore tensile stress is equals to F into your cos square theta divided by A. तो ये हो गया टेंसिल स्ट्रेस. सिर्फ वेक्टर्स लगा रहा हूं बेटा. आई एम जस्ट अप्लाइंग द वेक्टर्स. ठीक है ना. रिजॉल्व कर लो आराम से. F को मैंने रिजॉल्व किया और A को मैंने रिजॉल्व किया. एरिया ऑफ दिस वन इज ऑलवेज इन द एक्स एक्सिस. इसका एरिया ए डायरेक्शन में रहता है बेटा. ये तो यहाँ पर भी एरिया अपने पास ये है, तो मैंने इसको रिजॉल्व किया अलोंग द डायरेक्शन. ए डैश को रिजॉल्व किया अलोंग द and I got the tensile stress is equals to how much for me? Tensile stress is equals to your F cos square theta divided by your A. Clear है बेटा. चलो next one. Shearing stress. Shearing stress is equals to F sin theta, जो फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है इस बॉडी पे, डिवाइडेड बाय योर A dash, that is nothing but of your A dash. So ये एक्चुअली होता है कितना बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू योर tangential force divided by F tangential divided by your A dash. तो F tangential कितना है यहाँ पर? ये इंटू F इंटू योर sin theta. F इंटू योर sin theta, ये tangential force है. डिवाइडेड बाई A dash. A dash की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी आ चुकी है. दैट इज योर A डिवाइडेड बाई योर cos theta. तो ये बन गया मेरे पास F sin theta into your cos theta divided by your A. इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो into 2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये बन जाएगा मेरे को F into 2 sin theta into cos theta divided by 2 times of your A. तो और सिंप्लीफाई कर दो तो आई कैन राइट shearing stress is equals to shearing stress is equals to F into 2 sin theta into cos theta is how much beta? Sin 2 theta divided by 2 times of your A. तो ये हो गया shearing stress. क्लियर है? चलो. क्लियर फॉर एवरीवन? इंपॉर्टेंट है बेटा. डायरेक्टली आप लोग इसको याद रख सकते हो, लेकिन वैसे भी मैंने कॉन्सेप्ट भी करवा दिया है यहाँ पर. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से इसका एप्लीकेशन निकल जाएगा. ठीक है ना. तो क्वेश्चन क्या था? एक रॉड के ऊपर फोर्स F लग रहा था और A dash was making an angle theta with respect to original area. So he is asking the normal stress and shearing stress. Shearing stress मतलब tangential force divided by area. Normal stress मतलब normal force divided by normal area. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन. Get to this one is thorough. Relation between stress and strain. याद है किसी को? Hooke's law. Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to the strain. Within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. इसका एक ग्राफ होता है बेटा. ओके. ऑन वाई एक्सिस अपन लेते हैं स्ट्रेस और ऑन एक्स एक्सिस अपन लेते हैं स्ट्रेन.
So graph will be initially a straight line. That means within the elastic limit, if I am writing the relation right now for this one, वो से लेके some point यहाँ तक ये, it is obeying your Hooke's law. ठीक है? From the point A, even though when you are applying certain amount of force, there is a small jerk in this one like this. Then उसके बाद ऐसा थोड़ा मैं ऐसा थोड़ा, फिर उसके बाद ऐसा, देन थोड़ा सा जाके फिर मैक्सिमा होके फिर नीचे चले. ठीक है, इसमें सारा some points which you need to remember. This is a point of your B. This is a point of your C. This is a point of your D, and this is a point of your E. ठीक है, पॉइंट सी के पास परमानेंट सेटअप हो जाएगा. Done? Here, within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. That is known as of your Hooke's law. यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ stress is equals to some constant E into your strain. E is known as what? Moduli of elasticity. Moduli of elasticity. Stress is directly proportional to strain. Removing the proportionality constant, we are getting some constant K. K is known as of your moduli of elasticity. अब इसमें थोड़े points देख लीजिए बेटा. If I am going from O to A, stress is directly proportional to your strain हो जाएगा, isn't it? So it will be a straight line. Graph will be a straight line. Y is equals to mx condition में. उसके बाद if I am going from A to B, देखिए छोटा सा डिस्टेंस है, वो नॉन लीनियर है बेटा. इट इज ए नॉन लीनियर, स्ट्रेट नहीं रहेगा, इट इज नॉन लीनियर. Okay, but when you remove the external force, what is happening is the body will try to come back to its original position. So it will be non-linear, but still elastic at point B. Okay, so it is called as of your yield strength. It is called as what? Yield strength. Point E is called as what? Yield stress or strain. And within the elastic limit, if I am taking, the body will come back to the original position. So with it is still in the elastic limit till the point B. उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? यील्ड पॉइंट बोल रहे हैं. पॉइंट बी को हम लोग यील्ड पॉइंट बोल रहे हैं, ए से लेके बी तक का. That means we are applying the stress. No doubt the y is increasing, but when you remove the external force, it will come back to the original position. ठीक है, yielding point बोलो या elastic limit बोलो या elastic point बोलो, one and the same. ठीक है बेटा, is that clear? So B को मैं elastic limit बोलता हूँ. Or we can write this one as elastic limit. Then from B to C, permanent setup. No elastic limit.
will not regain shape. It will not regain shape. ठीक है, सी वो से ये और ये से बी जब तक लोगे, दिस रीजन को हम लोग इलास्टिक रीजन बोलते हैं. क्लियर बेटा? देन सी फ्रॉम बी टू डी. बी टू डी जा रहा हूं डायरेक्टली. स्ट्रेन इंक्रीज होगा, strain increases very rapidly, and if deforming force is removed, and if deforming force is removed, strain is not zero. ओके, सो बी टू डी का रीजन क्या बोलेंगे हम लोग? बी टू डी इज योर प्लास्टिक जोन. दिस वन इज ऑल्सो प्लास्टिक जोन. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 5 डी. दिस इज योर ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength. And point E is your fracture point. Okay, so these are some of the basic things you need to remember. D is your right now for me what beta? Ultimate tensile strength, maximum tensile strength which will never regain the shape. उसके बाद भी अगर फोर्स लगा रहे हो, इट विल ट्राई टू ब्रेक. दैट पॉइंट ई इज कॉल्ड एज ऑफ योर फ्रैक्चर पॉइंट. फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में और टेंसिल स्ट्रेंथ डी के बीच में पॉइंट अपने को याद रखना है बेटा. इफ डी एंड ई आर वेरी क्लोज, such materials are called as of your brittle. Okay, E and E की बीच की दूरी right now, if I'm taking right now like this is your T and this one is E. अगर इन दोनों की दूरी बहुत ज्यादा close है, isn't it? Then that region or that such type of metals are called as of your brittle. ठीक है? If D and E are very far, are very large, or मान के चलो far है, such type of metals are called as of your ductile metals. ठीक है, रफली ग्राफ में अगर ड्रॉ करूं स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, अगर इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा है, such type of metals are called as of your ductiles. अगर बहुत कम है, that is known as of your brittle. ठीक है, ग्राफ याद रखना बहुत ही ज्यादा यूज है बेटा अपने को. इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली ये ब्रिटल वाला पॉइंट. D and E are very close, they are known as brittle, and D and E are very large or far, they are known as of your ductile metals. Okay, so ये ग्राफ अपने को अच्छी तरह से याद रखना है. और ये जो परमानेंट सेटअप होता है, दिस इज लेसर देन 1%. ठीक है, बाकी का मंडे के क्लास में कर लेंगे. देन फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आप इलास्टिसिटी के पूरे प्रॉब्लम्स खत्म कर लीजिए. अगर एक दो असाइनमेंट चाहिए तो आई विल ट्राई टू सेंड इट आउट फ्रॉम माय साइड. ठीक है, पूरा डिटेल में करा रहा हूँ. आई एम नॉट लिविंग एनीथिंग. इतना भी अगर आप लोग कर लोगे ना लास्ट मोमेंट के लिए, दैट इज मोर देन इनफ इस चैप्टर के अंदर. यानी एक आधे घंटे के अंदर आप पूरा इलास्टिसिटी चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. मेरे को पढ़ाने का टाइम लग रहा है इसलिए लिखने में टाइम लग जा रहा है, लेकिन आप जब रिवाइज करोगे नोट्स के लेके, तो इट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 10 minutes टू रिवाइज ऑल द प्रॉब्लम्स. और प्रॉब्लम्स भी आप पहले PYQs खत्म करिए, उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स रहते हैं. एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स की जगह
बट मेक श्योर दैट यू ट्राई टू डेली स्टार्ट डूइंग द रिवीजन। इसके बाद टाइम नहीं है, फजर के टाइम पे रोज एक 10-10 क्वेश्चन तो भी इलास्टिसिटी के खत्म करिए। तो एक हफ्ते पे रोज के 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो इट विल बी 50 क्वेश्चन कर लोगे आप, मंडे का छोड़ के। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर 4 दिन पे कर रहे हो ना रोज के 10 क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, देन 40 क्वेश्चन तो आप आराम से इलास्टिसिटी चैप्टर में से खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाय बेटा।